Good evening, everyone. So, lung is the place of पो पो लंग हमारे पो का घर है। किसका घर है? लंग के अंदर कौन रहता है? पो। हु इज पो? पो मीन्स a special soul which is called corporeal soul, right? Corporeal soul. Po. When the person is coughing, why we offer the water? Okay, take the water. What is the connection with the water and coughing? क्या कनेक्शन है बताइए, सोचिए कि जो कफ है वो अंदर चला जाए पेट में, ये है क्या कि जो ओ करके कफ आया मुंह में, गुड़ अंदर, ये उद्देश्य क्या? नहीं। लंग हेट टू थिंग्स। लंग दो चीजों से नफरत करता है। आपको भी किसी ना किसी से नफरत तो होगी ना। लंग को दो दो लोगों से नफरत है। कैन यू टेल मी वो दो लोग कौन है? नंबर वन, ड्राइनेस, एंड नंबर टू, कोल्ड। है ना? लंग इज कमिंग अंडर द ड्राइनेस एनर्जी, lung is coming under the metal energy, but lung hate dryness, right? lung को जो नहीं पसंद है वो है dryness, right? That's why if the person is coming under the dry atmosphere, हम देखते हैं कभी कभी आसपास का वातावरण ड्राई है, they damage lungs. If you are not nourishing your body properly with the water, it disturb lungs. हमें अपने शरीर को पानी से सींचना पड़ता है, तो क्या करें? पानी पीते जाएं, ओनली वाटर। इन द ह्यूमन बॉडी वी हैव 70% water, or maybe more than 72%. But this all water is not this water. पूरा पानी यही है क्या? पूरा मानो कि मीरा जी का वजन है 60 किलो, the मीरा जी weight of मीरा जी 60 kilo, the 42 kg only water, so this is only this water. So now, no, that water is in the muscles. If you squeeze the muscle, there will be water. The water will be in the fat. The water will be in the form of blood, 5.5 liter blood. The water in the form of cerebrospinal fluid in the brain and the spinal cord. The water in the form of lymph, right? Even we can see some water in the skin. That's why skin is nourished, lubricated, smooth. In that way, all together we have 72% water, right? Now, lung is the main controller of water passage. Lung is the main controller. लंग का काम है पानी को घुमाना हर जगह. Lung will send the water to the skin, below the skin, between skin and muscles. Lung will send the water to the tissue, all around the tissue there is a water. Lung will send. Lung will send the water to the kidney. The lung is getting affected very badly with the dryness, so I will show you here quickly. So when there is a dryness all around,
अगर हमारे आसपास काफी ड्राइनेस हो, we can see here the dryness. And if you're living in this atmosphere, if you're walking in this atmosphere, then it will increase the dryness in your body. The meaning of dryness that you are having poor water level in the body. आपके शरीर में पानी का लेवल कम है. That is the meaning of dryness. Right. So if you are not nourishing your body, how to nourish the body? We have to nourish the body with the meal, with the fruits, with the juices, with the vegetables, having water. We know अगर आप फास्ट फूड खाते हैं, फास्ट फूड में कितना पानी होता है? बहुत कम. The fast food is having very decreased amount of the water. Definitely, if the person is taking too much fast food, he will be suffering with the skin problem, because lung problem will be definitely there, because you are eating the food which is very dry. Then you are increasing the dryness, it will damage your lungs. आपका lung damage करेगी. So what is the right food? The right food having good amount of water, like the fruits, like the vegetables, like the juices, like we are taking the dry fruit, soaking in the water, and then we are taking the dry fruits. So when we are eating the food, having too much greeny leafy vegetables, it will nourish your body, right? तो हम ऐसा खाना खाएं जिसमें, कहते हैं ना कि जैसा हमारा शरीर है वैसा खाना हमें खाना चाहिए. अब हमारे शरीर में 70-72% पानी है, तो हमें खाना भी ऐसा खाना चाहिए जैसे पत्तेदार सब्जियों में 90% पानी होता है. Fruits is also having very good amount of the water. In that water, there are lots of vitamins available, right? So what I want to tell you, the thing who damage the lungs, that is dryness, two things play a very important role. Number one, weather. Number two, eating habits. So when the patient coming to you, doctor, I'm suffering with the skin problems, what is the meaning of that? Who is making your skin very smooth? That is water. Sent by the lungs. But now lung is not able to send the water. What will happen? Skin will be dry. Then you will be applying too many creams, running to the doctor, eating lots of medicines and all. So make sure that you nourish. That's why we are coughing. Oh, cough, lungs. Oh, maybe lungs are dry. Take one sip of water. ऐसे तो करते हैं ना, समझ गए ना? वो थूक को निगलने के लिए नहीं करते, है ना? जो टीसीएम नहीं जानते उनको लगता होगा कि जो मुंह में उसको अंदर गड़क कर लो, ऐसा नहीं होता. So now, so when we talk about the lungs play a very important role. Lungs are sending the fluid in the skin here, and between the skin and muscles, स्किन और मसल्स के बीच में ये पानी को भेजते हैं, फ्लूइड को भेजते हैं, राइट? That's why our skin is nourished. So lungs are, in the previous class we have discussed, हमने पहले पुरानी क्लास में हमने ये बात की थी ऑलरेडी. हमने क्या बात की थी पुरानी क्लास में? The spleen is sending food chi to lungs. Lung is mixing air chi, right? Then there is a combination of air chi and food chi together are called झोंग chi. ये झोंग chi कहलाती है. So झोंग chi resides in the chest cavity. This is the place of झोंग chi.
or Zhongqi. It's controlling the pulse, it's controlling the heartbeat, it's controlling the respiration. तो झोंगची हमारी हार्टबीट को भी कंट्रोल करती है, झोंगची हमारी respiration को भी कंट्रोल करती है, right? So झोंगची play very important role in the chest cavity. The good झोंगची means you are having good food chi and good air chi. अगर आप हम बोल रहे हैं कि आपकी झोंगची अच्छी है, इसका मतलब है कि खाने से प्राप्त होने वाली ची अच्छी है और हवा से प्राप्त होने वाली ऊर्जा भी ची भी अच्छी है आपकी, right? So now your chest is play very important role. Now your heart will be pumping blood all around. Your lung is breathing pure, your lung is breathing wonderful oxygen. अब आप खुद बताइए मुझे कि अगर आप अच्छी ऑक्सीजन को ब्रीथ करेंगे और अच्छा ब्लड सप्लाई करेंगे तो बॉडी में एनर्जी रहेगी कि नहीं रहेगी? If you are breathing a wonderful oxygen and if you are pumping the very good blood throughout the body, you will be energetic or not? You are having good chi. That's why lungs are called governor of chi. Remember, lungs are the governor of chi. Very important sentence. If the person is telling doctor, I am feeling weakness, what is the meaning of weakness? Energy is not there, energy is less, chi is less, lung. I am feeling very tired, I am feeling lethargy. Oh, who is the governor of chi? Lung are the governor of chi. Improve zhong chi. Then what is the treatment? Okay, tell the patient, do pranayama. Take the wonderful air chi and eat the right food. Take the good food chi. Just improve two things, automatically tiredness will go away. दो चीजों को ठीक कर लो कि खाना ठीक खाओ, संतुलित खाना खाओ, न्यूट्रिशियस फूड खाओ ताकि फूड ची अच्छी बने, और साथ ही साथ में आप थोड़ा प्राणायाम करो, एयर ची लो. Okay, long. So air chi and food chi will combine, will form the zhong chi, which will control the chest cavity. Then heart will be pumping the wonderful amount of the blood, the right amount of the blood at everywhere. And also lung is doing two work. Number one, lung is receiving the pure energies. Number two, lung is sending water all around because lung is the controller of water पैसेज. हमारे शरीर में कितनी पानी की जो लाइंस बिछी हैं उनका कंट्रोलर लंग है. लंग इज द कंट्रोल ऑफ फ्लूइड ऑफ द ह्यूमन बॉडी, राइट? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस. नाउ दिस, लिसन, व्हेन यू आर ईटिंग द फूड, फर्स्ट इट इज गोइंग इन द स्टमक, राइट? देन spleen is sending to lungs. Then spleen is telling, okay, now my work is over. Now all fluid is with the lungs. आपने खाना खाया क्योंकि हमें तो जो कुछ मिलेगा खाने से ही मिलेगा. फ्लूइड तो खाने से ही मिलेगा, सब्जियों से मिलेगा, दाल से मिलेगा, चावल से मिलेगा. कहां से मिलेगा हमें पानी? फ्लूइड्स और एनर्जीज. वी आर गेटिंग एवरीथिंग फ्रॉम द फूड. Spleen will send to the lungs. The work of spleen is over. Now lung will decide, okay. Now lung will decide this fluid in three parts. अब लंग क्या करेगा? इसको तीन भाग में बांट देगा. तो हम तीनों भाग की बात करते हैं. So now lung is dividing this fluid in three parts. What are the three parts? The part number one sent to the part number one, very, very fine mist all around body, so covering the body surface like the skin, right?
So all around the body. So this is the human body. So very fine mist, it will send all around the body skin, all around the body skin. And all around the tissue. We are having thousand tissues, all around tissue. So every tissue, so all around body, skin, and all around tissue. So this is very, very fine form of fluid. ये हमारे लंग ने एकदम जो फाइन फॉर्म वाला फ्लूइड था वो हमारे शरीर के संपूर्ण शरीर की स्किन में भेज दिया और सारे टिश्यूज में भेज दिया, राइट। तो टिश्यू को भी पानी मिल गया और स्किन को भी पानी मिल गया। नाउ द हेवियर फ्लूइड will be sent to joints and holes, means orifices. We know in the joints we have fluid, in all the orifices we have fluid. कि हमारे joints के अंदर साइनेबल फ्लूइड होता है ना, कौन भेजता है? लंग भेजता है। Now there is no fluid, joints are telling cut, crepitation. And who is sending fluid? Who is the controller of water passage? Lung is the controller of water passage. Fine already sent to the tissue, to the skin. And now, who is not fine? The heavier fluid coming in the orifice. The orifice, this is the nose orifice. Backs, we can see in the ear. Around all the orifice. हमारी जितने भी बॉडी में होल्स होते हैं उसमें जो लिक्विड है वो हेवियर वाला है और जॉइंट्स में। तो देखो दो पार्ट हो गए, एक फाइन हो गया और एक हेवियर हो गया। इट्स क्लियर। नाउ थर्ड इज इम्प्योर। दिस इज इम्प्योर, आई कांट यूज, लंग इज टेलिंग ओके सेंड इट टू यूरिनरी ब्लैडर। तीसरा भाग कहां भेजा जाएगा? यूरिनरी ब्लैडर को। ओह दिस इज नॉट यूजफुल। So lung is sending third impure fluid to urinary bladder. अब यूरिनरी ब्लैडर तो इससे भी खुश है भाई। हाँ, यूरिनरी ब्लैडर तो इससे भी खुश है। वाह, राइट। सबका अपना अपना खाना होता है। जैसे सुअर, तो आप जो स्टूल कर दें और सुअर हैप्पी हो जाएगा, वाह माय फूड हैज कम। एवरीवन इज हैविंग डिफरेंट फूड ना, है ना। व्हाट आर थ्रोइंग, यू आर थ्रोइंग सम, आप सब्जी छीली आपने और छिलके फेंक दिए, लेकिन गाय भैंस बकरी तो खुश हो जाएगी, वाह माय फूड हैज कम। So urinary bladder is very happy after seeing the impure fluid. Wow. So urinary bladder will be nourished. Otherwise urinary bladder also will suffer with dryness. नहीं तो यूरिनरी ब्लैडर भी ड्राई हो जाएगा। यूरिनरी ब्लैडर ड्राई क्यों नहीं होगा? क्योंकि लंग ने उसको इम्प्योर फ्लूइड दे दिया और यूरिनरी ब्लैडर की ड्राइनेस उससे ही खत्म हो गई, राइट। अदरवाइज व्हाट विल हैपन इफ द यूरिनरी ब्लैडर will dry, then we know there are lots of problem because of the dryness of the urinary bladder. We know the urinary bladder channels, very big channel in the human body, right? What will do the urinary bladder? Urinary bladder को fluid मिला, urinary bladder working with the kidney. So what will do urinary bladder? पहले urinary bladder खुद जी भर के अपना पहले अपनी ड्राइनेस दूर कर लेगा। First the urinary bladder will remove its own dryness. Now we'll see, oh, this is the impure fluid. So it will divide into parts. The highly impure will expel in the form of urine. तो यूरिनरी ब्लैडर को जो पानी मिला उसको दो पार्ट में डिवाइड कर देगा। जो बहुत ज्यादा इम्प्योर होगा उसको यूरिन बना के निकाल दिया जाएगा और बाकी का रीएब्जॉर्ब करके कहां भेजा जाएगा वापस? कौन पानी को कंट्रोल करता है? अगेन लंग्स, लंग ओनली, लंग ओनली। नाउ
So you understood? So now this event is very important. So please listen very carefully. Number one, urinary bladder. Number one, lung is sending very, very fine fluid everywhere, skin, tissue, everywhere. Lung is sending heavy fluid to the joints and orifices. What is left over, remaining unwanted, impure fluid sent to the urinary bladder. ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब यूरिनरी ब्लैडर इसको जो बहुत ही ज्यादा गंदा होगा उसको यूरिन के रूप में निकाल देगा, बाकी रीअब्जॉर्ब करके लंग को वापस भेज देगा। नाउ लंग विल गेट द वेरी वेरी प्योर रिफाइंड फ्लूइड कमिंग बैक आफ्टर द प्यूरिफिकेशन, राइट? नाउ लंग ऑल्सो विल बी नरिश्ड। लंग को भी क्या मिलेगा? नरिशमेंट, क्योंकि लंग को भी तो नरिशमेंट चाहिए। आप सबके लिए खाना बनाते हो, आपको भी तो खाना चाहिए। आपने पूरे घर को खाना खिला दिया, अब बाद में कोई आके आपसे पूछे भैया तू भी खाना खा ले, है ना? सो लंग इज डूइंग वेरी गुड जॉब sending fluid all over. Now the very refined fluid will be coming back to the lung. Now lung will be nourished. That's why if the lung is dry, the what will happen? Dry cough. Why the lung is dry? लंग ड्राई क्यों हुआ? क्योंकि लंग को ही फ्लूइड नहीं मिल रहा। कहां से? यूरिनरी ब्लैडर से नहीं मिल रहा। एक फीमेल है, पूरे घर के लिए खाना बनाती है, लेकिन सबने खा के खत्म कर दिया, उसके लिए कुछ नहीं बचा, किचन खाली, राइट? अब कोई आए और उसे बोले लो तुम्हारे लिए भी खाना, wow, then she will eat. The same thing is happening. Lung is distributing fluid all around. Now the some fluid after refining it's coming back. Okay, now for this is your turn. Lungs, please take it. If lung is not getting this, suppose urinary bladder is weak, किसी का urinary bladder कमजोर है, होता है, कई लोगों का होता है, right? So lung will not get the fluid, lung will be getting dryness. Sign dry cough. Dry cough, what is the sign of lung dryness? लंग ड्राई होगा तो क्या लक्षण पैदा होंगे? पहला लक्षण होगा ड्राई कफिंग, दूसरा होगा ड्राई स्किन। ड्राई कफिंग, ड्राई स्किन, ड्राई थ्रोट, ड्राई माउथ, डी 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 डी। ड्राई माउथ, ड्राई थ्रोट, ड्राई कफ, ड्राई स्किन, राइट? In this way, we have to take care of the lungs. तो हमें देखना होगा कि वही गड़बड़ कहाँ है, और जहां भी गड़बड़ होगी उसी को हमें ठीक करना होगा। Got it? So in this way, we are working for the lungs. इस तरह से हम लंग पे काम करते हैं। Now, lung are very delicate organ. हमारे शरीर में लंग इतने डेलिकेट होते हैं ना, टीसीएम में कहा गया है कि जो सबसे ज्यादा डेलिकेट है वो लंग ही है। The most delicate element is lung. Immediately it will disturb. Immediately. कहता ना कि बहुत ही नाजुक है यार, तुम तो बहुत नाजुक हो, जरा धक्का लगा चरे चोट लग गई, है ना? कई लोग होते हैं बहुत नाजुक। लंग ऐसी बहुत नाजुक है। लंग इज वेरी डेलिकेट। So little bit changes in the weather, lung will disturb. Little bit changes in the food habit, lung will disturb. Little bit changes in the dryness, lung will disturb. So what is the right way to treat the lungs? लंग को ठीक करने का एक सबसे बेहतरीन तरीका, बहुत ही सिंपल तरीका है, बिना किसी दवा के, और बहुत ही सिंपल है। मैं आपको बताता हूँ, आप बोलोगे अरे वाह ये तो मजा आ गया सुन के। आपको सिर्फ एक चीज करना है, बस देखिए क्या करना है, बस एक चीज। यू जस्ट हैव टू डू
reverence or faith. The virtue of the lungs is faith, विश्वास, reverence. अटूट श्रद्धा, श्रद्धा, श्रद्धा से लंग्स ठीक हो जाता है. कितना आसान है ना. श्रद्धा तो बहुत आसान है, अपन कर ही सकते हैं. विदाउट ए सिंगल परसेंट डाउट, lung will be automatically will be 100% all right. So the virtue of lung is shraddha, reverence. And you know, shraddha is not the small word. Shraddha is a very great word, right? Actually, faith is also not accurate with shraddha. Shraddha is very higher word. कि आपकी श्रद्धा है. श्रद्धा जानते हैं आप क्या होता है? सुना होगा ना श्रद्धा, कि आपके गुरु में श्रद्धा है. Like you are having shraddha, you are having reverence in your gods, in your, yeah, right? Okay, we can tell believe, but believe is also a lower word if we do the shraddha, compare with the shraddha, right? So the virtue of the lung is reverence. जैसे हमने बात की थी, spleen is trust. Spleen is trust. So lung is, that's why the people who are doing lot regular pranayama, improving the air chi, having shraddha for some god, some divinity, some guru, automatically will see the great improvement in the lungs, right? तो ये इसका बहुत ही शानदार output है. So you should remember, if the person is, now why we are discussing this, what is the purpose, right? The purpose is this: if the patient is having opposite types of the mentality, right? Many person always doubtful, always they are against the faith, against the trust, against the reverence, right? And if they are suffering with the skin problem, if they are suffering with the lung disorders, so just improving this condition will make them better. सिर्फ एक यह चीज उनको better बना सकती है. Okay. So few more thing here. So when we talk about the I told you about the chi. Lung are the governor of chi, right? So bichi is the chi who is residing on the skin. हमारे स्किन में जो एक डिफेंस सिस्टम होता है, डिफेंस का निर्माण होता है, वो लंग के द्वारा किया जाता है. लंग इज सेंडिंग द एनर्जी ऑल अराउंड द स्किन and making one defense system. The defense system is called bichi. Bichi, right? अब जैसे उदाहरण के लिए कि आपने क्या किया कि आपने कम्बल लिया और ओढ़ लिया, right? So bichi is like the same. The lung is covering your entire body with one defense system, that is called bichi. इसीलिए कहते हैं कि जितने भी यिन ऑर्गन है सब अंदर रहते हैं, केवल लंग बाहर आकर सुरक्षा कवच का निर्माण करता है. Only the lung is the meridian who is yin, is still coming outside and making your defense system. Otherwise, you see, no any other meridian coming outside, right? So now see, now suppose some pathogen is coming, some cold pathogen is coming, cold like flu or the cold attacking on your body. जैसे कोई पैथोजन ने आपके ऊपर अटैक किया, now first it will fight with the bichi. Bichi is outside. Okay. So what will happen in the bichi? Now the first effect will come, because what is the work of bichi? Bichi is controlling the opening and the closing of the pores. हमारी स्किन में जो पोर होते हैं ना, उनको ओपन करना और क्लोज करना, ओपन करना और क्लोज करना. दिस इज द वर्क ऑफ बिची.
राइट। ये एक तरह का डिफेंस सिस्टम है, मतलब एक समझिए कि हमारा सिक्योरिटी गार्ड है बीची, जो बार बार पोर्स को खोल कर देखता रहता है कि शत्रु तो नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, ऐसे नहीं आ रहा है ना। इट्स ओपनिंग द पोर, क्लोजिंग द पोर, ओपनिंग द पोर, क्लोजिंग द पोर, ओपनिंग द पोर, सम स्वेट इज कमिंग आउट, पसीना थोड़ा निकला, और ठंड लगी तो क्लोजिंग द पोर। एंड वी नो जब ठंड लगती है तो क्या होता है, पोर बंद होते हैं कि खुलते हैं, व्हाट हैपन, क्लोजिंग द पोर। एज सुन एज देयर इज अ कोल्ड इन्वेजन, सारे खिड़कियां बंद, सारे दरवाजे बंद, then person will be under the attack of cold invasion, all the pores are closed, all the pores are closed. Now no sweating, sweating के लिए पोर का खुलना जरूरी है ना। when the sweating will happen, when the pore is open, right? Now the person will be coming to doctor, I am feeling body pain, I am feeling some infections, cough and cold, flu, something like that, body pain, and no sweating. Is it clear? Is it clear? Okay, then we'll ask, okay, tell me, sweating is there or no? हम तो इतना पूछना चाहते हैं कि वो पोर्स बंद हो गए हैं कि पोर्स खुले हुए हैं, जस्ट वी आर आस्किंग दिस। द पर्सन विल नो स्वेटिंग, इट मींस पोर्स आर क्लोज्ड। ओके, ओपन द पोर, start the sweating. In this way we are doing the treatment, right? So we are having certain points like with the help of this. So here so there is an attack of cold pathogen, or we are telling invasion of cold, invasion of cold, हमारे शरीर पर ठंड का आक्रमण हुआ, all pores are closed, right? Because beachy, the defense system has closed all the pores due to cold. Now, okay, fine. So the person is having no sweating, the feeling of feverish, उसे fever जैसा लगेगा. This is the sign of cold invasion, right? So remember one thing, the work of Vichy, closing and opening the pores. And who is making the Vichy? Lung is making the Vichy, right? Now suppose lungs are weak, अगर lungs कमजोर हैं, then Vichy will be weak. तो लंग ही बीची को बना रहे हैं, लंग आर मेकिंग द बीची, द आउटर कवरिंग ऑफ द स्किन. लंग आर वीक, बीची विल बी वीक. सो नाउ not able to close the pore, then what will happen? Sweating too much, too much. अगर पोर बंद नहीं होंगे तो पसीना खूब निकलेगा. So many persons are having spontaneous sweating, all the time sweating. Why? Because pores are not closed. Or sweating only with little exertion, only with little exertion. थोड़ा सा exertion किया और पसीना चालू हो गया, जरा सा ही. Why?
because pores are open. B chi is poor. Lung chi is poor. So if the lung chi is poor, the person will be having too much sweating. अगर किसी की का लंग कमजोर है तो उसको पसीना खूब टपकेगा. This is a very good scientific, very effective sign. Person is यहां से चल के 10 कदम चले, पसीना चालू हो गया. होता है ना कई लोगों में. खाना खा रहे हैं और खाना खाने की मेहनत से ही पसीना चालू हो गया. Right? Walking a little, 4 step or the maybe 50 meter, sweating. Why? Because lung chi is weak. So what is the treatment of sweating? अगर किसी को बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है, अगर किसी को बहुत ज्यादा पसीना निकलता है, थोड़ा सा ही मेहनत करने पर पसीना निकलता है, तो क्या करेंगे? ट्रीटमेंट बताइए. किसको ताकत देंगे? What we are going to improve? If the person is sweating with only little exertion. Now you understand why the person is sweating. Is it clear? The TCM means we have to understand everything scientifically. Just don't, okay, what is the protocol for sweating? Not like that. That is not the real TCM. वो TCM में मजा आता है क्या कि अरे पसीना नहीं आ रहा है, अच्छा जब किताब देखो और फोन करो किसी को कि पसीना नहीं आ रहा है, पसीना ज्यादा आ रहा है, क्या करें? ओके, check the book. We should know. Am I right or not? We should learn that why the sweating is very high with a little exertion. Because window is weak. You are not able to close the window. आपके घर की खिड़कियां कमजोर हैं, बंद नहीं कर पा रहे हो, तो बाहर निकल रहा है सब. क्या निकल रहा है? शरीर का पानी निकल रहा है. ज्यादा निकलेगा तो क्या होगा? We are having 70% in water in the human body, then you will be having lesser water, maybe 67%. Then you will suffer with a dryness and skin problems or lung problem, weakness also, right? So if the excess sweating is there and the dryness, dry skin is there, we have to work on the lungs. We have to understand, we are trying to understand what problems are connected with lungs. आखिरकार वो कौन सी problems हैं जो हमारे lungs से connected हैं और क्यों connected हैं, right? Why they are connected? Now चलो simple, suppose, oh, this is the lungs. Lung have water and lungs live in the upper floor. ये ऊपर का फ्लोर है, वहां lungs रहता है. Okay. Now we are asking, oh, kidney is asking, okay, lung, please give me water. Lung is telling, look, take the water. But it is blocked. Nothing is coming out. Are you getting my point? If the lung is blocked, if the lung is not able to send the water downward, तो लंग एक पानी की टंकी की तरह है. लंग इज द लाइक ए वाटर टैंक ऑन द रूफ. आपने नल चालू किया, पानी नहीं आ रहा है. वाटर टैंक इज फुल, बट देयर इज नो वाटर इन द वॉशरूम, इन द किचन, एनीवेयर, राइट? व्हाट विल हैपन? ऊपर ज्यादा पानी और नीचे ड्राइनेस हो गया कि नहीं हो गया? इन द अपर फ्लोर वी आर हैविंग टू मच वाटर. In the roof we are having too much water, and in the down we don't have water. Is it clear or no? Is it clear? अगर लंग ब्लॉक हो गया, अगर लंग पर आक्रमण हो गया, सपोज लंग इज ब्लॉक्ड, someone attacked on the lungs, suppose there is a some virus, some flu, cough and cold is happening, that is same thing. cough and someone is attacking on the lungs, lung is blocked, ऊपर पानी पानी. So the water in the chest,
cough in the chest, swelling on the face, puffy eyes. And if you go down, kidneys dry, urinary bladder is dry. Because of the dryness, we are having lower back pain. So this is the irregular distribution. What we have to do immediately, open the blockage, open the blockage. So we are suffering with the respiratory issues, breathlessness and all. थोड़ा ज्यादा हायर तो नहीं जा रहा है ना? जा रहा है तो बताइए, थोड़ा सा नीचे उतर के आ जाओ. मुझे थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है. आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. ओके ओके, प्लीज टेल मी ना. मेरे बेसिक से है, ऑल आर बेसिक, बट मे बी आई. ओके ओके, देन इट्स फाइन. गुड. Okay, perfect. Thank you. So now, in this way, the lung is the person who is having, I have seen the person. Some person is having too much sorrow and sadness in the life. Too much grief in the life. कई लोगों के जीवन में बहुत उदासी है, ग्रीफ है, दुख है. सबके जीवन में ही है वैसे तो देखा जाए, है ना? है कि नहीं? लेकिन किसी के में कम, किसी उनका मेरे में नहीं है. ठीक है, आप यार थोड़ा बहुत तो सबके में है. मतलब it's not only because of you. Maybe you are some dear and near, and you are sometime worrying, oh, my son, my grandson, why this happened. So we are getting some. Okay, suppose someone is having too much sadness, too much grief, too much sorrow, then lung will be suffering. Am I right? Lung will be suffering. क्योंकि लंग में जो एक सोल रहती है, लंग के अंदर एक आत्मा का निवास होता है जिसे कहते हैं पो. That is suffering. Getting? The po want to make you happy all the time. Then what will happen, you know? Then po will tell you, okay, please go to some guru. That's why person who is always unhappy, always sad, then in the search of guru, then going to the guru, surrendering 100% श्रद्धा, then getting happiness back. है? तो कहते हैं ना कि कभी कभी हम जब किसी गुरु के पास जाते हैं, ऐसे नहीं जाते. पहले धक्का मार लगता है, पंच लगता है, डिश क्या हूं, वो पंच लगता है ना. वी गो इन द सैडनेस, वी गो इन द ग्रीफ, तभी भगवान को याद करते हैं. नहीं तो कौन याद करता है भगवान को? तो भगवान को कभी याद करते हैं, गुरु को कभी याद करते हैं जब दुखों के पहाड़ टूटते हैं. भैया, किसी को पैसे का पहाड़, है ना, किसी को ब्रेकअप का, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ. सो नाउ वी सरेंडर टू द गुरु, अगेन विल बिकम हैप्पी. बिकॉज वो हैप्पीनेस कहां से आ रही है? आप एक पत्थर पर भी पूरी श्रद्धा कर दो ना, हैप्पीनेस विल बी कमिंग बैक. जस्ट यू शुड हैव फेथ, बिकॉज दैट इज द वर्च्यू ऑफ लंग्स. वो हमारी लंग का वर्च्यू है, वो हमारी लंग की क्वालिटी है. राइट? लंग को दो चीजें पसंद नहीं है, मैंने बताया था, ड्राइनेस एंड कोल्ड. टू थिंग्स आर never liked by lungs. So I will go very quickly now. Time is running very fast. Okay. So when we talk about the body, skin and the body hair are coming under the metal energy, lung energy, because all around there is a beachy. All around over the skin there is a beachy. Even the body hair is coming under the metal energy or the lung energy. We know the lung are connected with the nose. Lung are connected with the smell. हमें पता है कि कोविड के समय कितने लोगों की सुगंध चली गई थी. Many person were suffering with the smell problem due to COVID. So COVID was attacking the lungs, but it was affecting their smell. So whenever person is having any problem in the smell and any problem in the nose,
then we have to work on the lungs. अच्छा बताइए, ऐसा कौन सा खाना है जो खाने से नाक से पानी टपकने लगता है? Which type of food, if you're eating, then automatically some water coming out from the nose? Chili, pungent, मिर्च मसाला, पानी पूरी खाते हैं ना, तो इधर पानी पूरी खा रहे हैं और इधर पानी टपक रहा है नाक से, आंख से, और फिर वो इतना मजा आता है उसमें ना, आता है। So when we are eating the spicy food ना, spicy food is spicy food is activating your lungs, है ना, इसलिए पानी पूरी के पानी को कहते हैं डिटॉक्स वाटर, है ना। तो उसको बनाइए और उसको पीजिए, फिर देखिए पूरा अंदर का लंग्स का पूरा कफ निकल जाएगा बाहर, राइट? ओके, है ना। व्हाई? बिकॉज फूड। ओके कमल जी, आई एम टेलिंग कमल जी that if we are eating any spicy food, like the chili, like very strong and spicy, like the ginger, and especially chili, then we'll see there is some water is coming out from the nose, right? So I want to tell you this, that spicy food is affecting your lungs. I will show you the image of spicy things so you will understand better. Look at this. So when you are eating the spicy food, it is affecting your lungs. Then we can see runny nose. We can see some water will be coming out from the nose, right? So this is the pungent food is having very special effect for lungs. It's very helpful in the treatment. We are going to use this concept. The person is having strong lungs, the speech will be stronger. एक व्यक्ति के पास एक अच्छे लंग्स है, उसकी स्पीच अच्छी होगी। उधर फॉर एग्जांपल आई विल टेल यू, suppose you are sitting here without the mic, and the 100 200 people are sitting, and even the last person can hear your voice, means your lungs are strong. The mental personality are having very strong voice. But suppose you are speaking, but the people are not able to hear, means your lungs are weak. You have to work on the lungs. अगर 100 लोग 200 लोग बैठे हैं और बिना माइक के आपकी आवाज सुन रहे दूर तक, यानी आपके लंग्स में ताकत है. And even you are not shouting, you are just speaking normally. Even the person sitting on the last can hear your sound. You are having strong lungs. You are having strong Zhong Qi. Right? So that's why when any singer coming to us, the singer, oh, can you do something for bringing the power in my chest? I tell them, okay, improve the lung Qi. By, okay, they're asking any Ayurveda medicine? Yes. Abrak Vashma. I'm telling, take the Abrak Vashma. If Abrak Vashma is very good for improving the power of chest. Abrak. We are telling, okay, 250 milligram morning, evening with the honey. It will improve the power of your lungs, power of your chest. That is Ayurveda medicine. But just I want to tell you that if you are having good Zhong Qi, good power in the chest, then your speech will be very stronger. So who make your speech stronger? The answer is lung Qi. इसका आंसर है lung Qi, right? So this was the lung is over. बस इतना ही लंग में समझना था, सब कुछ समझ लिया है। एक आखिरी चीज बता देता हूं तो लंग पूरा ही कंप्लीट हो जाएगा कि लंग को कैसे कमजोर होता है। इफ द पर्सन इज लाइंग डाउन फॉर too much time, it is weakening the lungs. Like, see, I told you, if the person is sitting all the time, it's doing weakening of the spleen.
And if the person is lying down, okay, normal sleep is necessary. Normal sleep, like 5 hours, 7 hours, 8 hours, whatever your sleep time. But after that, all the time you're lying down, watching the TV, you're just lying down, lying down, lying down, it will weaken your lungs. ये आपके लंग को कमजोर कर देगा. ओके, तो ये लंग का था. तो जो लोग, जो अगर आपकी नींद पूरी हो गई है तो मत सोइए, लेट कर काम मत करिए. थक जाएं, okay, then lie down for 20 minutes, take the yoga nidra or listen the music, then sit back again. Just don't try to always lying down and try to weaken your lung. हमेशा लेट लेट कर अपने लंग को कमजोर मत बनाइए. आजकल पैटर्न हो गया ना कि लोग है ना टीवी भी लेट के देखते हैं, है ना, वीडियो गेम लेट के खेलते हैं, तो लंग कमजोर हो. गॉट इट? तो चलिए, ऑन द दिस बेसिस वी विल बी गिविंग क्विज यू टुमारो एंड आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द पॉइंट्स. हम कल क्विज देंगे, आप क्विज की तैयारी करेगा. टुमारो विल बी डिस्कसिंग किडनी, then tomorrow will be our 8th day and the final day, completion of this course. So that name of that medicine is Abhragvashu. I will write here. Okay, thank you so much everyone. Good night, have a sweet dream. See you tomorrow. Bye bye.